Ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are doing well. So today's session is about how to prepare the master keyword file, and in the second part of this session we'll be discussing in detail how to interpret it or how to perform analysis on this master keyword file. There are like a lot of benefits of preparing this file, and as we prepare it, we'll see inshallah how important it is in order to validate our product, or how important it is to select our main comparator, which we see for the next 2 to 3 months. So I'll quickly share my screen. So let's take a product, let's take a dummy product, and on that product first we'll be conducting viability analysis, and later on with that viability analysis we'll be building upon on how to build the master keyword file. So in the last few sessions we were working on a particular product. Let's take that product again, and that was Chef Hat. So first let's assume that we already know this time that this is its main keyword. If we did not know that this particular word is the main keyword of the product, then we would have conducted relevancy analysis first. But here we are taking an assumption that we have already conducted the relevancy analysis. So now we'll quickly jump into the viability analysis. So I'll run the Helium extension. So as discussed earlier as well, the most important thing right now is that first we have to sort these ASINs according to the revenue, because we want to select those comparators which are highest revenue generating. So the first criteria is that I have to sort them from the revenue from highest to lowest. And the second thing is that now I have to select at least 10 comparators or 10 ASINs which are relevant, and those ASINs whose organic rank is less than 35, because the organic rank of this particular ASIN is 5, of this particular ASIN is 7, this is 1159. So I repeat, the organic rank of the ASIN of the highest revenue generating ASIN which we are selecting right now should be less than 35, because here we are taking an assumption that on Amazon the revenue might come till the 31st organic spot, and this is not like a hard and fast rule. It's quite possible that a revenue for a particular product in a particular niche is only coming till, let's assume, 15th organic spot or 20th organic spot, but we are taking an assumption that 50% of the times, or let's say 50 to 75% of the times, the customer who searches a particular search term, he or she might scroll down till the 35th organic spot, and he might make purchases till the 35th organic spot. So we are taking an assumption that the revenue or sales come till the first 35 organic spots. So we sorted it according to the revenue wise. And then now we have to select 10 ASINs which are relevant and less than 35th organic spot. So it's first, second, third, fourth, fifth. This is greater than 37, so we'll not be taking this. Ninth. This is sort of relevant. Let's skip this. Let's take this one. So now we have selected 9 products, and we'll be taking one more. So yes. So now we have selected 10 ASINs, and we'll run keyword research. Although we have discussed viability analysis in detail in previous lectures, but the main purpose of repeating this is to tell you guys is to that how to build master keyword file from viability analysis. So always ensure guys that this is Amazon.com or any marketplace on which you're working right now. Okay, so I'll repeat the process. I want basically those keywords whose search volume is at least 300. Position rank is 1 till 48. Word count by default it is 2, so I change it to 1.
And match type should be organic because I want the organically ranked keywords and not sponsored one. So right now there are like around 20,241 keywords. Let's see after applying the filter how many keywords are we left behind. So these are 990 keywords right now. So I'll quickly download the Excel file. So now first I'll conduct relevancy analysis just to ensure, because here we are taking an assumption that we have already conducted relevancy analysis to find our main keyword. But in order to reach to viability analysis, we'll be needing relevancy analysis again. So first I'll remove all the irrelevant columns which I do not need right now. At this time, we'll keep competing products in CPR as well. This is position rank, as I mentioned earlier, is always our first ASIN which we have selected. I'll copy the ASIN and I'll paste it here. Here I'll insert a column, call it relevancy, and I'll now apply the filter of COUNTIF. Here I'm taking an assumption that you guys already know that what's the importance or why are we using this formula. But just for the sake of a newbie or a newcomer who's watching my lectures for the very first time, I can repeat the main concept of this formula again. So here, this means that this keyword has an organic rank of less than 35 for all these 10 highest revenue generating comparators or ASIN. For example, for this keyword, this particular ASIN has an organic spot of 1, which means that when we search this particular term on Amazon.com, the first ASIN or the first product which will appear is this one. So its organic spot is 1. The organic rank or organic spot of this particular ASIN is 3 against this keyword 4, 10, second, 6, 16, 9th organic spot, 7th organic spot, and 8th organic spot. This means that all the organic spots for these 10 highest revenue generating comparators against this particular keyword is less than 35. So that's why we have given it a score of 10, which means that all the ASINs are ranked less than 35 for this particular keyword. I'll just double click on this formula to see the relevancy. For example, this also has a relevancy of 10. This has also a relevancy of 10. So now first, let's work on finding the main keyword, and then we'll build on to the viability analysis. So for the main keyword, we should have a particular keyword should have the highest search volume and the highest relevancy. I'll put a filter. So largest to smallest. And against this, we'll see the search volume, largest to smallest. We can see that this particular keyword, although has a highest search volume, but the relevancy is 1. The relevancy for this particular keyword with the second highest search volume is 0. So we need that particular keyword which has highest relevancy and highest search volume. I'll again sort it from largest to smallest, and we'll scroll to see which one should be our main keyword. So I can see that this particular keyword has the highest search volume, and I'm not saying or, highest search volume and the highest relevancy. You might say that this particular keyword also has a relevancy of 10, and this also has a relevancy of 10. All these keywords has a relevancy of 10. However, their search volume is far less than the search volume of this particular keyword. So we'll take this particular keyword as our main keyword. Now, let's move on to the viability analysis. Before that, I can
label it as viability analysis so we do not get confused when we are working on building the master keyword file. So as usual, we'll insert, maybe we can insert more columns this time. I'm sorry, more rows this time. So now I'll repeat, or I'll put in the formula count if this should be the range, and again the organic spot should be less than 35. But before moving on to viability analysis, let's make one more thing clear, because you might get confused that we have got a lot of keywords right now. So what is the criteria? Should we work on all the keywords which we have found out right now, or should we make better use of this relevancy column to eliminate those keywords who have a very less relevancy score? So what I'll do is, first, I'll try to eliminate those keywords whose relevancy is less than 3. I can simply delete them. But yes, guys, before deleting them, because due to shortage of time, I cannot do everything, each and everything very individually. So you guys just can simply copy paste these terms and search on Amazon and see if the products are relevant, because the relevancy score which we're getting right now is against these 10 comparators and not all the comparators or all the products which are listed on the first page against this particular keywords. So what you guys can do is you can individually, before like deleting all the keywords which have a relevancy score of less than 3, you can copy paste these terms and search on Amazon to see if you can get maybe 50% relevant products with a relevant design. You can just keep them and assign that particular keyword a relevancy score of 3. So now I'm taking an assumption that all these keywords are irrelevant keywords due to shortage of time. So I'll delete all these keywords. Now I have those keywords whose relevancy score is 3 or greater than 3, and the search volume is 300 and more. So let's see how many keywords do we have right now. We have got around 197 keywords. So as far as viability analysis is concerned, yes, like basically the main purpose or the importance of getting a lot of keywords is similar to that of the doors to a product. More keywords means more doors towards reaching a particular product. For example, if a particular product has potential keywords of like around 30 to 40, so that means that in 30 to 40 different ways, our customers can search a particular product and reach to that product and purchase it. However, if a product has like around 100 or 200 potential keywords, this means that there are like 200 or 100 different ways through which a customer can reach to a particular product. So, and yes, these are also potential keywords. Those keywords whose relevancy score is 3 and greater than 3, and the search volume is at least 300, which means that on average, at least 10 customers are searching the particular keyword on Amazon. So let's now narrow down the results a bit more. We have got 197 keywords right now. So let's tighten our criteria a bit more, and let's get only those keywords whose search volume is at least 500. So we have got like 102 keywords right now. Let's tighten the criteria a bit more. Let's do it 700, because our main priority is to get around 60 to 70 potential keywords in order to build the master keyword file. Because it's quite possible if I was just in the ideation stage and if I just want to conduct the viability analysis, it's quite possible that I might stick to the volume of 300 and relevancy of 3 and greater than 3 and conduct viability analysis. But because I have to build the master keyword file using the viability analysis, so that's why I'm just narrowing
or digging the data a bit more. So now I can see I've got 56 keywords. So yes, 56 is a good number to build the master keyword file. And guys, do remember that the keywords which I'm not considering right now, this does not mean that they're not potential keywords. They're also potential keywords. So what I can do is, because we're only taking at least keywords whose relevancy score is between 3 and 10 and whose search volume is at least 700. So what I can do is I can clear the filter. So I can take less than 699. I'll obviously not delete them. I'll copy them and I'll keep them saved so that later on I can also look upon these keywords or to identify the more potential keywords from this. But let's copy these headings as well. So we can say relevancy is greater than 3, volume greater than, sorry, less than 700 and greater than 300. I can just put the sheet here. Now what I have to do is, because I have copy paste those keywords there, I can just delete them from here. So yes, now as I mentioned earlier, we have got like 56 keywords right now, and now we'll be conducting the viability analysis. So I'll again put in the formula of COUNTIF. I've selected the range for that particular ASIN and I've put in the formula. So now let me tell you guys again what's the difference between this formula and this formula. In this particular formula, we were seeing that how many of the comparators or how many of the highest revenue generating ASINs are organically ranked on less than 35th organic spot against this particular keyword. And in this formula, what we are looking is, we are seeing that for this particular ASIN or for this particular product, how many of all these keywords are ranked less than 35th spot. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I have to identify if there is any keyword whose organic spot is greater than 35. Yes, this one has the organic spot is greater than 35. And the rest of all the keywords for this particular ASIN has an organic spot less than 35. So that's why out of these 56 keywords, this ASIN is ranked on 55 keywords. Now what I'll do is I'll drag the formula and I can calculate percentage. So this means that basically the main purpose of conducting viability analysis is to see the opportunity in the particular product which we believe is the best for us to go. We can see that 98% that this particular ASIN, this particular highest revenue generating ASIN is ranked on 98% of the keyword, which means that on 98% of the potential keywords, this particular ASIN is ranked.
This one is only using 50% of all the opportunity. For example, there are 56 potential keywords right now, and this particular ASIN is only ranked on 28. And by ranking on 28 keywords, I mean it is ranked on 28 keywords whose organic spot is less than 35. It's ranked on 38, 26, 32, 29, 30, 20, 24, 31. So what we do is now we can color them according to their percentages. For example, this one, we usually color those ASINs whose percentage is less than 50 as green. So this is basically green. We take 50 to 60 as yellow, which means medium opportunity. So basically the main purpose of identifying the potential keywords or identifying these percentages is to see that how much space is there in this particular product. We can see that these 10 ASINs were highest revenue generating, and out of these 10, 1, 2, 3, 4, 4 of them have only like less than 50% of their keywords ranked on less than 35 organic spot. So this means that there is opportunity to go into these products. Let's assume that all of these colors were orange, or 7 out of 10 were orange. So that would mean that all the opportunity or all the potential keywords are already being used by these highest revenue generating ASINs. So there might be very less chunk for us to rank upon. So we can see that yes, like basically this is a good sign that yes, there is a sort of viability to go into this product. So after we are done with the viability analysis, if after we have reached to this stage, what we have to do with this, now we will move upon building the first sheet of the master keyword file. So this is basically the first sheet, which we call organic sheet of the master keyword file. So I just built this. I'll definitely share the sheet with you guys, so you guys don't have to write all these things again. But now what I'll do is I'll try to fill in this sheet, because the first part of this session, of today's session, is on how to build the master keyword file, and later on we'll have a session on its interpretation or on its analysis. So it's seller 1 to seller 10. So what I'll do is but let's get back and let's see that what do we require from these things. So we need the ASIN for the particular seller, the link to that ASIN, or to the link to that its product listing page, the main image for that particular seller, its brand name, the seller type, which means is it FBA, FBM, or AMC, the title for that particular seller, the reviews, how many reviews like do that product has, the rating of that product, its current price, the price graph all time. I'll let you know guys that where do we get this price graph, current BSR for the main category, the BSR graph all time, estimated monthly sales, and that's usually we take that from JS monthly sales graph, estimated monthly revenue, captured search volume percentage, revenue over volume ratio, sales over volume ratio, sponsored occurrences, top 10 positions, age of that particular product, how many variations like does that product have, LQS or the listing quality score, and the EBC content, that's enhanced brand content, keyword dominancy, and total keywords captured. So before I move on and practically build this sheet, it's very important to let you know guys the first distinction. These 10 sellers are those 10 ASINs or those 10 comparators who are organically ranked on the top
first top 10 positions, regardless of whether that product is relevant, whether that product is irrelevant. We simply have to pick up 10 sellers against our main keyword who are organically ranked on the first top 10 positions. In viability analysis, I'll repeat, we took these 10 ASINs and we sorted them according to the revenue from highest to lowest. But here, we are not doing any sort of sorting. We are not doing any sort of filtering. We are just picking up the first 10 organically ranked sellers. I'll move back to Amazon. And let's refresh this page. So basically the trick in quickly building the master keyword file, what we can do is, because I know that a lot of the data is already available in the JS. For example, if I manually fetch or manually copy paste the data from each and what I can do is I can open the second, third, it's the fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and this is the 10th one. So if I manually go into the product listing page of each and every ASIN and copy paste all the relevant information, it might take me a lot more time. So what I can do is I'll try to run JS and after running JS, I'll download the CSV file and see that 50% of the data will be available already in its Excel form or in its CSV file. So I think let's just give it a minute or two so till all the data can be loaded. So yes, once all the data on the JS extension is loaded, I'll download the CSV file. So this is its CSV file, and basically we are only interested in the top 10 organically ranked ASINs. So let's see what do we require first. So first we require the ASIN for the first 10 spots. So let's see, these are the ASINs. So I'll 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I'll copy them. Come to this sheet. I've got all the 10 ASINs here. I'll repeat this for the link. We do not have main image right now. We will have to go individually on the product listing of each and every product in order to get the screenshot of the main image, but we do have the brand name on this sheet. Because the main purpose or your main motive in building the master keyword file should be to automate most of the process so that you have to do less and analyze more. So you guys can, if you guys will be seeing this later on, the recording later on, you guys can simply increase its speed so you don't have to wait for me to do each and everything manually. Next, I need title, reviews, and rating. These are reviews and rating. I have picked them.
first is reviews and then the rating. So let's see. Then we have got current price. Let's get the title first. So it's price graph all time. We individually have to see this from Keepa, and I'll later on do this and let you guys know how do we have to take the graph out. Current PSR main category that we'll see from the product listing page of each and every ASIN. BSR graph all time. We'll be taking this from Keepa as well. Estimated monthly sales. We can take this from the JS file. So this will be taking JS monthly graph later on. Estimated monthly revenue. So estimated monthly revenue is basically estimated monthly sales into the price of that particular product. We'll simply drag this along. This is the captured search volume. We'll discuss this later on. Captured search volume percentage. We'll calculate this later on. Now we have to see, do we have something left which we can copy from the JS file? No, age, yes, we can take age from there. So it's basically the date first available and we do not have age in months. So what we can do is we can do that manually. So it was first available in 20th on 20th June 2016, and now it's 2021 after 5 years. So let's say June, July, let's say 63 months. Let's say this was available on 1st of, take that as, let's say, just a wild guess, 68 months. 2016, let's take it as 58 months. I don't know what's happening with this number. So it was available on 13th of November 2019, and now it's 2021. Let's take it as 24. Let's take this as, let's say, I'm just giving it a wild guess, 30th August 2021, 30th, and now it's like 2 months old. 30th July 2020. So let's say 14 months old. 4th November 2015, and for 6 year, 54. It's right, will be around, let's take it as 53 months. 1st January 2018, 3.5 years. So that will be around 36 months and 6 months, around 42 months. So it's first available on 18th January 2016. So again, 5.5 years. So that's around 66 months. Let's just copy it and again paste it. Now we are left with variation. Let's see if we get variations from this.
So yes, variations, we'll have to see them individually. So yes, now let's move on to those things which were not available on the JS file, the main image of the first seller. What I'll do is I'll try to fill in the first column only, because filling all the columns might take a lot of time, and then we'll move on to the lower part of this sheet. So what does this main image mean is that I'll go ahead and open this link as it's the same thing. And I'll copy the main image from here. I'll upload it here, and I'll get a link against that particular image. I'll come back and paste that link for that main image here. The next thing is the price graph all time. For this price graph, I'll come back again to the product listing page of the particular ASIN which we're studying right now. I'll come to the keeper, price history. Here I'll select all. So here, what I can see right now, the price history all time for that particular product. I'll simply take the screenshot. I'll copy paste. I'm sorry, I'll copy paste the link here. Next, it's current BSR main category. So the main category is clothing and shoes and jewelry. And the BSR, or the best selling rank, is 1034. I'll copy it and I'll paste it here. Next, I need the BSR graph all time for this particular product in order to see the fluctuations of BSR in the recent months. I'll come back again to the keeper graph. Just give me a second, I'll log in again. The main category is, we can take for both home and kitchen and clothing, shoes, and jewelry. So we can take an assumption that this product was launched somewhere here, and we can see the fluctuation of the PSR. So we can really analyze it later, but simply for the purpose of just building the sheet, I'll take a screenshot of it. And I'll copy it here. So its next is JS monthly sales graph. I'll come back to the product listing page. Although we are getting a sales graph from here as well, but in order to let you know guys it in more detail, or sometimes it's quite possible that this might not appear here. So what you guys have to do in that scenario is the monthly sales graph.
So here I can see the monthly sales graph for that particular product. Next is captured search volume. It is related to the lower part of this sheet. This as well, this as well, this as well, this as well. Variations, LQS and EBC. So we're left with three things which we can scrap from the already existing data. So the first thing is variations. Let's come back to the product which we're analyzing or studying right now. And let's see how many variations does this product have. So like there are three variations, which there are like three color variations. The same product is available in three different colors. So we can go ahead and write three here. The listing quality score. Basically, this is the listing quality score, which you can see right now, 6.62 out of 10. Here I can write 6.62. The third one is EBC content. That's the enhanced brand content, which only the brand registered sellers can use. Let's see if this product has it or not. No, unfortunately, this product does not have a EBC content. Let's see if this product has this. Yes, you can see in the product description, this product is using enhanced brand content. Let's see the third one. The third one also does not have an enhanced brand content. So coming back, the first one, as the first one does not has the enhanced brand content, we can simply write no. So basically, this was the first part, the upper part of the first sheet of the master keyword file, which we built by using the already existing data. So what I'll do is now I'll stop the recording here. I'll completely fill the rest of the parts, and then I'll move on to the lower part of the sheet. So now guys, as you can see that we have got all the data which had to be scrapped individually from all the listings that has been done. So now we'll move on to the lower part of this sheet, because in order to fill out these things, we'll have to fill out the lower part of the sheet first. So first of all, right now, you can see that phrase, search volume, competing products, CPR, and relevancy column. So these has to be filled by copy pasting these keywords. So I'll copy these keywords considering that these are the potential keywords with a relevancy score of 3 and above, and a search volume being at least 700. So because it had a formula, so I'll paste special and values, so that the formula is not copy paste and only the values are paste. So now what I have to do next is that I'll be needing individual data of all these 10 sellers. This means that now I'll have to download Helium files individually for all of these 10 sellers. So what I can do with this, that in order to make the sheet more presentable and before downloading these files, I can insert another column named basic sheet, and before that I can name this sheet as organic. So basically I can leave 6 rows, and then you'll get to know that what's the main purpose of making it into a more presentable form. 3, 4, 5, 6, because we'll be needing 6 columns for each from each Helium file. It's 3, 4, 5, 6. The seventh one we can color it. I'll repeat this practice 10 times.
I'll copy this ASIN and I'll paste it here. I'll repeat this practice 10 times for each ASIN. So now what I've done is that I have like made this sheet in a more presentable form, and I have divided the ASINs with these colorful columns. As I mentioned earlier that I have to now download Helium files for each and every individual seller. I'll go back to I'll run the Helium extension again. Let me just close down these additional tabs. So let me run the Helium extension again for the first 10 sellers. This is the first one. This is the second one. This is the third one. This is the fourth one. This is the fifth one. What I have to do is I do not have to apply any sort of filter. I just have to change this default from 2 to 1. And then I have to download all the files. So now let me download all the files now. So after downloading each file, I'll have to remove the irrelevant columns. I copy it. I go to my master keyword file and I paste it here. I'll repeat this process for all the individual ASINs. So in order to make the video faster for you guys, I can stop the recording and I'll resume the recording once I have copy pasted all the relevant data into the basic sheet. So now guys, as you can see that I've copy pasted all the data from the individual sheets which I downloaded for each particular seller or ASIN. And also guys, make sure that you are double checking that whether you are copy pasting the same or the data from the correct file to this master keyword sheet. Now moving back to this, now what we have to do is, now we'll apply Vlookup formula in order to get the organic rank for this particular keyword
for this particular seller. So I'll now apply the Vlookup formula. We have to look this into this table. I'll lock it. We need the data from sixth column. I'll repeat this practice again. Just guys have to use this Vlookup formula. Basically, we are getting the organic rank of this particular keyword for this ASIN. So I can understand that this might take like a bit time for you guys to understand and to practically implement it. But yes, once you practice it for like 2 to 3 times, you'll definitely know the shortcuts and the tips and tricks in order to make it in a faster way. And again, repeating while I make this sheet is that the most important aspect of the master keyword is its analysis and not how to practically make it. Because this is something which we'll be using in order to select our main comparator in order to see that whether is it a good niche or not a good niche, and what will be the pros and cons in order to get into this product. Make sure guys you lock the sheet. I'm sorry, lock the table. It's quite possible that this particular keyword might not exist uh, in that particular table. I'll just double check it once I complete it for 10 as well.
so now let's check this. What was the keyword? Chef hat. I check chef hat in this table. Ninth table. Yes, so that was not present in table 9. So I'll go back and drag it for all the keywords. So it's only displaying me 15, 15, 15. It's quite possible there might be a glitch why when I downloaded the Helium file for this particular instance. So in that scenario, I might repeat this. I might download that file again and then use the Vlookup formula again. But right now, due to shortage of time, I might not do it. Now let's try to fill out this sheet. Total search volume of the relevant keywords. We'll take the sum of. So it's around 201,000. Number of relevant keywords. These are around 56 keywords here. Now let's move on to the captured search volume. So how now do we determine this term? What does this term mean? What I'll do is I'll place a filter on this row. Now basically I want the search volume of those keywords for this particular seller or for this particular seller whose organic rank is less than or equal to 20. So what I'll do is I'll go to number filters, less than or equal to 20. I'll get all these keywords. So let's see how many keywords are these. These are around 41 keywords. So what matters to me most right now is its search volume. The search volume for the keywords whose organic rank for this particular seller is 20 or less than 20. So it's 136,261. I'll come back, I'll clear the filters, and I'll repeat this again for this. So basically, I'll repeat this exercise again. And remember one thing, guys, before moving on to apply the filter onto the next organic rank, you guys have to ensure that you clear filters before moving on so that that data is not overlapped. So yes, we guess less keywords for this, and it's 78,064.
So as I mentioned earlier, this was sort of glitch, but yes, we can take it, and we might not consider this seller while doing interpretation or analysis. But sort of let's sort of see this again. Like, what exactly was the problem here? Let's try to put the formula again and see if there was a problem with the formula. So yes, I guess there was sort of a problem with the formula. So I think that's sorted out now. So now let's see. The combined search volume of those keywords whose organic rank is less than 20. So it's 88,355. So now let's remove the filter from here. So now the second thing is captured search volume percentage, which means this divided by the total search volume of the 56 potential keywords. Simply, we have to calculate this. I can lock this. Now I'll simply drag it towards the end. Next is revenue over volume ratio. So we calculated the estimated revenue, I guess. Yes, this is the revenue divided by the search volume. Next is sales over volume ratio. So we got our sales here divided by the volume. So we're getting very low numbers, which means that the sales are very, very less as compared to the search volume. And later on, we'll try to justify these values when we'll be doing analysis on the master keyword file. So next is sponsored occurrences. What I'll do is, so this means at this point of time, we might need another sheet. So before making another sheet, let's first see this, that whether you can get this right now or not. That's top 10 positions. So what I'll do is, I'll simply see that how many of these 56 keywords for this particular seller have the organic spot of 10 or less than 10. So what I'll do is I'll simply put 10 and I'll see how many keywords do I got. I've got 31 keywords, which means 31 out of these 56 keywords for this particular seller has an organic rank of 10 or less than 10. I've got 31. I'll remove the filter. I'll move on to the second one. I've got 17.
So we've got 12 keywords again here. So I've got 18 keywords here. Again, I'm repeating this, guys. Just ensure that you remove the filter from the previous thing before moving on to the second one. Yes, we are done with this now. So we have got 8 keywords whose organic rank is 10 or less than 10 for this particular seller. So I'll remove the filter here from again. So yes, so now only we are left with this keyword dominancy, total keywords captured, and the sponsored occurrences. This basically means that how many from these 56 keywords is this particular seller running PPC on. So just give me a second. I'll try to practically do this for you guys. So for these two things, again, from this will be the same as we did for viability analysis. We'll again put the countif formula. This is selected the range less than 35. I'm repeating this again. It's quite possible that these 10 asins might not be the same as these 10 asins, because these 10 asins we sorted them revenue wise, and these are the highest revenue generating asins. And these asins, these 10 asins are just those asins which were ranked on the 10th, on the first 10 spots against our main keyword. So now what you can do is we need to find sorry, I think I put in the wrong formula. It's which be 55 divided by the total number of keywords. So it's 98%. Let's track the formula and see the spaces here as well. So previously we analyzed the spaces here, and right now we are analyzing the spaces here now. So let's color them again according to color scheme. So it's 98, so this can be yellow. Less than 50 are always green. So again, we can see there are around 4 green spaces and there are like 3-4 yellow spaces, which is a good signal, because now we have conducted viability analysis from 2 different ways. From the first way, when we sorted out the ASINs according to revenue, we identified some yellow and green spaces. And now when we took the top 10 comparators who were organically ranked, we again can see potential spaces in it. But again, right now, we'll not make this criteria for decision, because this was not the only main purpose for making this master keyword file. So now let's jump on to the next things.
So we need this as well before we jump on to the next things. This will be done once we are done with the relevant things. So before moving on and making the sponsored sheet, I'll add few more columns here. So what does this individual contribution mean? So this basically means that we need to see the contribution of this particular keyword from the total search volume. So that's around 23%, which means that 23% of the search volume is dominated by this keyword. I'll simply drag this. Now we need to see the cumulative contribution. So we can see that we get number of 100 by the end of this sheet, which means that the first keyword is contributing 23% towards the total search volume, and the combined two keywords are contributing 28%, because this is the cumulative contribution. The first three keywords are contributing to the 30% of the main search volume. So here we have just put this. This column will basically be filled once we start analysis and select our main comparator. Let's move on to see if there's anything left before we move on to the next sheet. So the total search volume is again this. Relevant positions are 56 for right now. Minimum monthly revenue and our target monthly sales, that will again be calculated after we have selected our main comparator after analyzing this main sheet. Because right now we're only constructing or building this master keyword file and we have not moved on to the analysis part. Let's see this. Top 50% search volume. Come here and see less than 50. So there are the first 23 keywords contribute towards 50% of the total search volume. So these are the first 23 keywords. And we can also take the sum of these first 23 keywords. And that is 97,769. Now we do see the next 30% from 50 to 80. These are basically 12 keywords. With a search volume of 40,007. Now we need to see the last 20% of the chunk. It's 21 keywords with a search volume of 63,351.
Although we have not started the analysis part right now, but are you guys seeing the potential here that we might usually ignore these keywords, these long tail keywords, or the keywords which are towards the end, or which are not contributing much if we take their individual contribution. But if we combine them uh, to the 20th percent long tail keywords or the below keywords, we can see that these 21 keywords have a combined search volume of 63,000, which is even greater than the mid tail 30% keywords. So this is basically the opportunity. These are basically the keywords which are ignored by most of the sellers. So this potential keyword search volume is basically the sum of the top and the mid tail. Now we are left with this column and we are left with this sales segregation column. Let's add another sheet. Call it sponsored. Come back here. Just copy this whole sheet and paste it here. What you guys need to change here is that just change from organic to sponsored. Also remove the data because we'll be fetching new data from the basic sheet. I'm just trying to make the sheet in a more presentable form at each stage so that you guys are not confused while we do its analysis. Simply we'll put Vlookup formula, find this keyword in this basic sheet, now I need the fifth column. It's 32. I'll simply try to complete it in a quick manner. Because we had put in formula in the organic sheet, so that's why the numbers changed here. What I'll do is I'll go back, copy paste it here again.
that numbers are not changed when we are changing the sponsored rank numbers. Let's see 8 and let's see 10 because I cannot see any number. Let's go back, see these two tables. If there is a glitch, if there's a problem with the formula or what. So yes, I can see that there is no sponsored rank. Either there might be a glitch when downloading this report because I cannot see any problem with the formula, or it's quite possible that these sellers are not running any sort of PPC campaigns on these keywords. What I'll have to do is sponsored occurrences. So I want to see how many of these keywords is this seller running PPC campaigns on, and specifically the sponsored rank should be 10 or less than 10. So let's put in formula filter here again. There is only one keyword whose sponsored rank is less than 10. So I'll put 1. Basically, the purpose of doing this is to see that whether this niche is PPC dominated or not. I'll repeat this again. So this seller is running campaign PPC. This seller might be running, or these sellers might be running campaigns on more than 11 keywords, but I'm just considering the sponsored rank less than 10. So we've got 6 here. So yes, now we have almost completed our master keyword file. We're again left with this column, which we'll
do after we have done our analysis on it. And again, we are left with these two things. The rest are completed. I'll simply copy paste them and I'll paste them here as well. So yes, guys, a few more things before we move on to the analysis part is that we will be needing 10 more sheets now, and we label each sheet with this. So we are making these sheets in order to study each comparator, each of the 10 comparators which we have selected in detail. And last one is comparator. Now what I have to simply do is I'll go back to comparator 1. But not now. I think let's leave this thing towards the end because we only have to copy paste all these sheets and paste them in all of these new sheets which we just made for each comparator, and we'll just apply one single filter for each one of them. So let's leave it towards the last because we're still left with a few missing columns right now. This column and these two values. So one last thing which we usually use in order to get a more pool of keywords, and we have discussed it previously as well when we discussed the keyword analysis. But let's do the keywords analysis here as well. What I need to do is now I'll now simply copy paste all these keywords into one file. Basically, this is the keyword analysis. And now we'll also see the page relevancy and the word count for each and every of the keyword. Because that's why it's called master keyword file, because we're trying to incorporate all the aspects which we can evaluate before
going into this particular product. This is basically nothing new, and again, the keyword analysis which we discussed. But for those people who will be watching this video and those who do not have access to the previous session for keyword analysis, they can just look at how keyword analysis performed in our company, or how our team performs keyword analysis. What I'll do is, now I'll come back. I'll try to make it in a more presentable manner. I'll simply add one column for word count and the second one for the page relevancy. I'll simply put, first what I'll do is, I'll go to data, and I'll remove the duplicates from the phrase column. So we got 15,761 duplicates and all of them are removed now. Secondly, I'll go ahead and put in some filters. So the search volume, as we discussed in the beginning of the video, should be at least 300, but we moved on to 700 when we were doing the viability analysis. So let's put in, for example, 500 here. And the organic rank for these particular keywords should be at least 20. So let's see how many keywords are we left behind. We're left with 194 potential keywords. Let's make it 15 now, because we're trying to get more potential keyword. If you have the space to play around, because we'll be needing at least 60 to 70 potential keywords, so we can make it less than or equal to 15. Let's see how many keywords do we have right now. We've got 143 keywords. So now let's move this from 500 to 700. So as you guys can see that we have got around 57 potential keywords. So now expect you guys to we'll just write the formula for word count here. And you guys have to find out the page relevancy, which means that you guys have to individually copy these keywords, go and search on Amazon and see how many relevant products do you see from 48. Let's assume for this particular keyword, which is also our main keyword, you might come across 48 out of 48 relevant products. So the percentage would be 100. For example, for the next keyword, you might come across 40 relevant products out of 48, and the percentage would be 83%. This is how you guys need to perform this keyword analysis. So yes, this session was basically how we have to build this master keyword file from viability analysis. So basically what we did was we started off from Amazon and we have built all this sheet from scratch. Like, it was not scripted, and I did not had a custom built or an already built master keyword file. I built this from scratch in front of you guys. And in the next session, we analyze all this data, and then we'll select our main comparator for this particular product. So yes, now let's meet in the next half of this session. So I'll be stopping the recording here. Yes, so now this is the second part of the master keyword session. So पहले सेशन में हमने basically discuss ये किया था कि master keyword sheet construct किस तरह करते हैं, इसको scratch से build किस तरह करते हैं.
But the most important thing is to how to analyze it, how to read the data, because this is very important data which we have fetched from Amazon. इसमें basically building master keyword sheet is not a big task. It's more of a data scrapping कि आपने data basically जो exist कर रहा था already different जगह पर, वो आपने एक जगह इकट्ठा करके उसको scrap कर लिया by using Helium, JS and other tools. So what we'll see is okay, from this data, now we'll see each and every row, the importance of it, and then we'll try to select our main comparator. So let's start. So I'll just try to repeat the rows again as well. So these are basically all the ASINs for each seller. ये सबकी link है कि if for example we want to see this product, we'll quickly copy paste this link onto Amazon. So this is the main image for each of the product. This is the brand name. So we'll see if there is a sort of brand dominancy or not. So यहाँ से हमें brand dominancy नजर नहीं आ रही. And actually, we can also see this from JS. So you guys might think at this point of time, then what's the purpose of making this master keyword sheet? So seller type, we can see it's almost all of them are FBA. Title भी हमें अभी हम इसको use करेंगे कि हमने title कैसे देखने और ये कहाँ इस्तेमाल होता है. So we can see reviews of all the sellers and we can see कि reviews इतने ज़्यादा top 10 के नहीं है. Only the first one is a lot more. लेकिन कंपैरेटिवली हम लोग देखें तो मेजॉरिटी का 1000 से कम ही रिव्यूज हैं. अगेन हमारी कोशिश ये होती है कि द कंपैरेटर व्हिच वी आर सिलेक्टिंग उसके जो रिव्यूज हैं दे आर लेस देन 1000 और 1500, so it's easier for us to get those reviews and replace that particular comparator which we have selected. We can see there's a consistency in rating and usually and mostly all of them are above 4.5 on average. अगर हम देखें तो 4.5 से ज़्यादा ही बनता है. This is 4.1, this is 4.3, but these two inconsistencies are sort of acceptable. We can see there's a consistency of price 6.99, 6.9, 7.99, 11.99, 9.99, 7.99, 7.99, and 10.74. Now we have to see that what's the main reason कि ये ज़्यादा कोई ज़्यादा charge कर रहा है, ये 11.99 क्यों charge कर रहा है? It's quite possible that this particular seller might be selling this product in pack of 2. Like I have no idea right now. वो हम देखते हैं कि वो वाकई में पैक ऑफ 3 में या बेच रहे हैं, तो वी कैन जस्ट क्विकली सी देयर टाइटल्स. कि टाइटल्स में यूजुअली मेंशन होता है कि कितने पैक में वो सेलर बेच रहा है. तो दिस इज द फर्स्ट वन. सेकंड वन इसमें कोई मेंशन नहीं हुआ. Just give me a second, guys. Yes. So basically, we are seeing a title. This is the third one. So we can see that this particular seller is selling this item in pack of 3. यानी वो एक ही product pack of 3 में बेच रहा है. So we can now see कि okay, this price can be justified now कि वो 11.99 में बेच रहा है. We can see this one. इसमें इसने नहीं mention किया हुआ whether it's selling in pack. So this particular seller is selling in pack of 24, and we can see okay in top 10 against this main keyword of chef hat. ये कोई seller है जो organically top 10 में rank किया हुआ है, and he's particularly selling 24 pieces for kids, most probably kids and adults दोनों के लिए हैं, लेकिन ये 24 pieces बेच रहा है. So I'll be quite surprised and see कि ये तो फिर एक तरह का undercharge कर रहा है. So this particular seller was selling 3 pieces and this particular seller is selling 24 pack paper chef hats for 11.99. So that might be surprising for me, and I might individually open these links and see what's going on in this area. So this particular seller is selling for 13.5, and it's not mentioned in its title that whether it's selling in pack of 2, pack of 3, pack of 5, or is it just one item. So let's just see why is it selling it. Let's just see if it's selling in pack of 1, 2 or 3. So यहाँ तो हमें नजर आ रहा है कि he is only selling in pack of 1, कि सिर्फ एक ही वो बेच रहा है. So then I can assume okay, so because it is a tall chef hat, it's quite possible that he might be charging a premium for that. Or there is another possibility, if for example if there यहाँ कोई ऐसा seller होता जो
फॉर एग्जाम्पल $18 चार्ज कर रहा होता या $20 चार्ज कर रहा होता, सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो कोई बड़ा ब्रांड भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट शूज, कोई हम शूज कर रहे हैं, तो शूज में फॉर एग्जाम्पल नाइकी एडिडास अगर आके बेच रहे हैं, तो नाइकी एंड एडिडास वुड ऑल दो अगर सेम प्रोडक्ट भी वो लोग बेच रहे हैं, तो दे माइट बी चार्जिंग अ प्रीमियम फॉर देयर ब्रांड नेम एंड फॉर देयर ब्रांड इमेज. So let's just move back to this and move on to, so price graph basically हम लोग इसलिए करते हैं कि when we'll select our competitor, we'll open this price graph and see कि price जो है उसमें consistency है. For example ये तो नहीं है कि 11.99 इसने भी recently किया है, because ये तो हमने सारा recent data fetch किया है. So we'll open up and we'll see that whether is it a consistent data or whether it's not a consistent data. So let's see how to read that as well. I'll try to open up one of the links and we'll try to read the data from Keepa. So basically, if you guys can see that, we can see the price consistent ही रही है 6.99 पे, it went on to 5.99 for between 6th of August till 21st of September, and then it थोड़ा सा I think ऊपर गई price और then it came back 6.99 पे वो वापस चली गई. It also went up to 8.99 in July. In consistency हम लोग देखें तो 6.99 पर ही ज्यादा है. But right now he's selling it at 7.99. अभी हम 7.99 अगर देखें तो ये recent ही jump है कि उसने 29th अक्टूबर के बाद ही, इस मतलब recently, for example अगर आज 1st नवंबर है तो अभी 2 दिन पहले ही उसने 7.99 पर वो किया है. So here we can safely assume, okay, it's not 7.99, we can see okay it's 6.99 because price तो उसने अभी recently change किया है. Let's see the graph for this particular seller as well. Pack of 3, pack of 4 में बेच रहा है. I'm sorry, pack of 3 में बेच रहा है. There are, sorry, 4 variations for it, 4 different colors. So let's see कि वाकई में 11.99 पर ही रहा है या ये प्राइस इसने recently change किया. So yes, we can see that most of the time 11.99 पर ही ये था, and before 20th of before September 2020 पिछले साल वो 10.99 पर ज्यादा टाइम रुका था, and for 11.99 वो थोड़े अरसे के लिए आया था. So we can see okay this price is justified according to the Keepa graph. And let's see this inconsistency कि उसने 13.5 ऐसे तो नहीं है कि इसने इस सेलर की तरह जिसने 7.99 6.99 प्राइस थी और 2 दिन पहले 7.99 की है. We can see this as well. हो सकता है उसने 13.5 अभी recently Q4 में किया. We can see कि इस सेलर ने काफी दफा प्राइस अपनी जब से वो मार्केट में आया उसने काफी दफा चेंज की है, but we can see कि 12 जुलाई से ऑलमोस्ट वो इसी प्राइस पर ही रुका है. बीच में आई थिंक इट वेंट अप टू 19.99 एज वेल. इट्स क्वाइट पॉसिबल, हम ये assumption ले सकते हैं, well like we are not studying the graph right now, but let me tell you guys one thing कि कभी कभी बहुत छोटे अरसे के लिए आप लोगों वो कंपेरेटर्स या जो एसेंस हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपनी प्राइस इंक्रीज इसलिए कर देते हैं टू लोअर डाउन दी डिमांड. इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उनकी इन्वेंट्री खत्म हो रही हो एंड द नेक्स्ट इन्वेंट्री which might reach the warehouse might take some time, so they try to increase their price to lower the demand just to make sure that they are not out of stock, because जब आप out of stock हो जाते हैं so it has a negative impact on your overall listing and indexing for each keyword. वो तो काम फिर खराब हो गया ना कि आप जब out of stock चले गए तो Amazon की नजरों में तो you're a bad seller then because you have not planned your inventory well. So coming back and moving on to the next thing, current price हमने देख ली, price graph we have studied it. Current BSR, so BSR, the lesser the BSR the greater the sales velocity or the sales volume or whatever you consider it right now.
तो इसमें हम देखते हैं कि अच्छा अगर ये इसके रिव्यूज ज्यादा हैं विच मींस इट्स अ गुड सेलर, और इसके बीएसआर जो है वो सबसे कम है. Let's move on to the estimated monthly sales. 11,000, less than 2,000, less than 1,000, less than 2,000. So बाकी हम लोग देखेंगे टॉप 10 में सारी नीश जो है वो 2,000 से कम सेल्स लेकर आ रही है मंथली, लेकिन ये जो सेलर है ये 11,000 तक की सेल्स हर महीने लेकर आ रहा है. सो दैट माइट ऑल्सो बी सरप्राइजिंग फॉर मी कि अच्छा मैं देखूं कि ये कर एक्चुअली में कर क्या रहा है. अब इसमें मंथली रेवेन्यू भी अराउंड 77,000 पर मंथ, which is far greater than all the monthly revenue जो बाकी sellers earn कर रहे हैं. Captured search volume is 136,000 और total हमारा देखें captured search volume around 2019 around 200,000 है. तो ये भी ऐसा ऐसा भी नहीं है कि ये around for example 190,000 search captured search volume like 67.75% is a captured search volume percentage. तो ऐसा भी नहीं कि 90 above है, लेकिन फिर भी ये बहुत आउट क्लास कर रहे हैं, बहुत आउट परफॉर्म कर रहे हैं इस नीश के अंदर. सो बेसिकली व्हाट दिस रेवेन्यू टू वॉल्यूम रेशियो इज के सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन हम देखते हैं कि रेवेन्यू अगर ये 77,000 का कर रहा है तो कितने कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट ये कर रहा है. So which we can see it's around 0.39. Again, it's sales over volume ratio. So basically, one important thing I think while making the sheet, there might be a sort of error. इसमें we always take revenue over the captured search volume. जो captured search volume जो उसने capture किया है उसके जरिए वो revenue कितना ले रहा है. So I'll इसी तरह sales over volume ratio, sales over, let me see if I locked it or not. Yes, we do not need to lock it here. So ये B29 we can take the captured search volume. So what is revenue and what is sales? So revenue equals to sales into price. So जब हम देखें कि हमारी price between the products is same, जैसे 6.99 6.99 ये हमने अभी देखी, ये भी इसको आप 6.99 कंसिडर ही कीजिए, 7.99 जो इसने अभी 2 दिन पहले किए. तो हम लोग बेसिकली ये देखते हैं जब हमारी प्राइस सेम हो तब हम रेवेन्यू ओवर वॉल्यूम रेशियो को कंसिडर करते हैं. एंड द मेन हमारा फोकस ये होना चाहिए कि द मैक्सिमम the revenue over volume ratio, the good it is for us to select our comparator. So it's 0.57, 0.12, 0.07, and we can see कि revenue over volume ratio भी obviously इसका ज़्यादा है. And जब हम देखते हैं कि there is an inconsistency in prices, तो revenue equals to sales into price, the price change है तो revenue हमें सही चीज़ नहीं दिखाता. तब हम लोग जो मेन हमारा फोकस होता है that should be on sales over volume ratio. कि कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम जिसने सर्च वॉल्यूम कैप्चर किया है उसके अगेंस्ट ये सेल्स कितनी लेकर आ रहा है. राइट नाउ वी कैन सी कि जो सेल्स ये लेकर आ रहा है दैट्स अराउंड 11,000 अगेंस्ट 136,000 कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम. सो दैट्स आल्सो ग्रेट कि 8.13 1.71. हमारी कोशिश यही होती है कि सेल्स ओवर वॉल्यूम रेशियो शुड बी ग्रेटर देन 1%. ओके, मूविंग ऑन. अभी इसमें हम लोग ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा इसका है और इसके बाद 1.98 इसका है and so far and so on. But let me just go over all these things. उसके बाद we'll move on to selecting the comparator. Sponsored occurrences, as we discussed earlier, कि basically how many of these potential keywords, how many of these 56 keywords are being used by this particular seller to run PPC, and the criteria being is कि जो sponsored rank है it should be less than 10. तो इसका सिर्फ एक ही है कीवर्ड जिस पे ये
ऑल्दो हो सकता है बहुत ज्यादा कीवर्ड्स पर ये पीपीसी चला रहा हो, लेकिन एक ही ऐसा कीवर्ड है जिसका स्पॉन्सर्ड रैंक 10 से कम है. सो दिस इज अगेन एन आई ओपनिंग सिचुएशन फॉर मी कि अच्छा, मुझे अभी यहाँ तक ये लग रहा था कि दिस इज डूइंग ब्रिलियंट राइट नाउ, कि कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम भी इसका बहुत अच्छा है, सेल्स पर वॉल्यूम रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है. तो मुझे लग रहा था हो सकता है ये पीपीसी दबा कर चला रहा हो, लेकिन यहाँ पता चल रहा है कि ये पीपीसी तो इतनी चला ही नहीं रहा, फिर भी ये सेल्स लेकर आ रहा है, फिर भी ये टॉप पर बैठा हुआ है. तो कुछ ना कुछ वजह तो इसकी हो सकती है. So basically this whole column, I'm sorry, this whole row lets us know that whether this niche is PPC dominated or not PPC dominated. For example, अगर तो यहाँ for example greater than 25, 40, 50 या 100 इस तरह के नंबर्स नजर आ रहे होते तो मुझे ये एक सिग्नल मिल रहा होता, ओके सो लेट्स नाउ टेक अ स्टेप बैक एंड एनालाइज द सिचुएशन अगेन, बिकॉज ये तो पीपीसी डोमिनेटेड नीश है. अगर मैं इस प्रोडक्ट के अंदर चला गया तो कल को जो मुझे कीवर्ड्स पर तो बिड ही बहुत ज्यादा लगेगी, मेरा तो पीपीसी पर कंपटीशन ही बहुत ज्यादा होगा, मेरा 60 to 70% जो बजट है वही पीपीसी पर ड्रेन हो जाएगा. सो दैट माइट बी एन आई ओपनिंग फॉर मी. बट इस टाइम मैं देख रहा हूँ कि अच्छा, दीज सेलर्स आर गोइंग गुड एंड पीपीसी में भी अभी स्पेस मौजूद है, यानी मैं पीपीसी चला कर भी इन सबको आराम से काट सकता हूँ. टॉप इन पोजीशंस ऑर्गेनिकली बात हो रही है कि 31 ऐसे कीवर्ड्स हैं आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पोटेंशियल कीवर्ड्स जो ये सेलर यूज कर रहा है, और उसका ऑर्गेनिक स्पॉट लेस देन 20 है. और दिस इज ऑब्वियसली द एज. इसमें हम बेसिकली एज को देख रहे होते हैं, और जिसकी एज लेस देन 6 मंथ्स होती है उसको हम लोग वैसे ही डिस्कार्ड कर देते हैं, बिकॉज उसका डाटा माइट नॉट बी suitable for us. So we can see that less than 6 months ये है. So we'll not be studying the data for this particular ASIN in detail, क्योंकि ये हो सकता है कि अभी गिवअवेज कर रहा हो, पीपीसी चला रहा हो. देखें ये अभी जैसे 18 पे सबसे ज्यादा इस टाइम हम लोग देखें, हम सॉरी 6 कीवर्ड्स पर पीपीसी चला रहे हैं. तो हम लोग अभी, क्योंकि बिकॉज पहले 6 महीने तो इससे हनीमून पीरियड, आप अपना सारा बजट लगा रहे होते हैं इन ऑर्डर टू गेट स्टेबल रैंकिंग. सो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि वो गिवअवेज करके, मैनी चैट चला के, सर्च फाइंड बाय मेथड यूज करके, वील बी डिस्कसिंग दीज इन डिटेल लेटर ऑन इफ यू गाइस आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस राइट नाउ. सो ये हम लोगों ने इसको देख लिया. नेक्स्ट इज वेरिएशंस. वी कैन सी ओके, सो वेरिएशन, साइज वेरिएशंस भी हो सकती हैं, कलर वेरिएशंस भी हो सकती हैं, डिजाइन वेरिएशंस भी हो सकती हैं. दिस इज द लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर. वी कैन सी मतलब जितना लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ज्यादा होता है उतनी आपकी लिस्टिंग ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है. मतलब ग्रेटर द लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर, ग्रेटर द चांसेस कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा कन्वर्ट होगी. अभी हम लोग सिर्फ पहले सेलर को क्योंकि स्टडी कर रहे थे तो ये देख रहे हैं 6.62. 6.62 इज लेस देन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज सेलर्स अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी 5.65 है. अब ये देखें, दिस इज अगेन एन आई ओपनिंग सिचुएशन फॉर मी. तो लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर भी नहीं अच्छा, पीपीसी भी नहीं इतनी चला रहा, फिर भी ये ऊपर बैठा हुआ है, टॉप 1 में बैठा हुआ है, इतनी सेल्स लेकर आ रहा है. और ईबीसी कंटेंट भी नहीं है. इट्स आल्सो नॉट यूजिंग एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट. सो दैट्स बेसिकली विल बी डिस्कसिंग इट लेटर ऑन. लेकिन एनहांस्ड ब्रांड कंटेंट में आपको एक एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ व्हाट एग्जैक्टली इट इज. दिस इज बेसिकली feature which is given to the brand registered sellers to have this on their listing. So this is basically enhanced brand content. ये आपकी conversion के, आपकी listing ऑप्टिमाइजेशन इंक्रीज करते हैं, और जब सेलर लैंड बायर लैंड करता है आपकी लिस्टिंग में तो उसके कन्वर्जन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं. सो लेकिन देखें ये वो भी नहीं डाल रहा. सो दिस माइट बी आई ओपनिंग फॉर मी. सो मुझे क्योंकि डाटा को स्टडी करना है, मुझे ये डाटा एक्सप्लेन करना है, फॉर एग्जाम्पल टू माई क्लाइंट या टू एनी वन विद हुम आई एक्सप्लेनिंग. सो आई ट्राई टू जस्टिफाई इट कि अच्छा रिव्यूज सही है, एज इसकी पुरानी है. So these reviews can be justified from age कि अच्छा क्योंकि 5 साल से ज्यादा पुराना बैठा हुआ है तो ये तो हो सकता है. लेकिन क्योंकि पीपीसी भी नहीं चला रहा, लिस्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर भी डाउन है, ईबीसी कंटेंट भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो मैं सोचूंगा हो सकता है कि ये ब्रांड बहुत फेमस ब्रांड हो, कि लोग ब्रांड की वजह से, ब्रांड नेम की वजह से ये प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं. और इसके अलावा वजह क्या हो सकती है, और ये वजह हो सकती है कि चले पीपीसी तो ये नहीं चला रहा, हो सकता है कि ये मैं इसकी सोशल मीडिया प्रेजेंस देखूंगा, फेसबुक पे, इंस्टा पे, पिंटरेस्ट पे जाके देखूंगा, टिकटॉक पे देखूंगा ये मार्केटिंग कहाँ कहाँ कर रहा है. हो सकता है कि एक्सटर्नल ट्रैफिक अमेजोन पर लेकर आ रहा हो कि ये
अपनी आउट ऑफ Amazon इतनी अच्छी ब्रांडिंग और इतनी अच्छी पब्लिसिटी कर रहे हैं कि पीपल कम टू Amazon टू परचेज दिस प्रोडक्ट एंड दे हैव दिस ब्रांड in like in their mind. Okay, for example, if they want to purchase chef hat, तो whenever they think about chef hat, उनके ज़हन में ये जो particular brand है, I do not know how to spell it, High Zero or whatever it is, वो उनके ज़हन में आ जाता है. So this is something which is, मतलब जब मैंने डाटा सारा ये लिया तो मुझे एक ब्रॉडर पिक्चर आ गई, क्योंकि अभी मैं एक एक सेलर करके एनालाइज सिचुएशन को कर रहा हूँ. सो नाउ मूविंग ऑन, आई कैन सी दैट अ लॉट ऑफ देम हैव less than, let's say, 1500 reviews, so it's very easier for me to compete with them. Now moving on, now I'll see sales to volume ratio. हम let's say इसको पकड़ लेते हैं. Let's assume कि this is also 6.99, क्योंकि अभी मैंने आपको दिखाया कि इसकी प्राइस 2 दिन पहले ही चेंज हुई है, और ये जो बाकी डेटा है that might be consistent with 6.99. So let's assume it's 6.99. It's also 6.99. So let's compare these two sellers. So इसमें what I'll see कि अच्छा 200 इसके reviews हैं, this is 632, so this means that the opportunity to replace this comparator is more as compared to 632, but 632 is also not a big number. I might be able to chase this product in like 3 to 4 months आराम से. इसमें मैं देखता हूँ कि BSR अच्छा इसका इतना अच्छा भी नहीं है as compared to this, इसका ज़्यादा अच्छा BSR है. This is going selling around 729 units per month, और ये सिर्फ 705 कर रहा है. ऑब्वियसली रेवेन्यू इसका ही ज्यादा होगा. कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम भी इसका ज्यादा है, इसका कम है. ऑब्वियसली कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज भी ऑब्वियसली ग्रेटर होगी. वी कैन सी दैट सेल्स टू वॉल्यूम रेशियो इसकी ज्यादा है. सो आई माइट बी इंक्लाइन टुवर्ड्स दिस सेलर इन ऑर्डर टू चूज इट एज माय मेन कंपेरेटर. स्पॉन्सर्ड अकरेंसेस अच्छा बराबर की जा रही है, बराबर की पीपीसी वो चला रहे हैं. मतलब हो सकता है कि पीपीसी ये ज्यादा चला रहा हो या ये ज्यादा चला रहा हो, लेकिन particularly talking about the sponsored rank of 10 के अच्छा 10-11 ऐसे keywords हैं दोनों के जिनका sponsored rank 10 और less than 10 है. तो इसके टॉप पोजीशंस में टॉप 10 पोजीशंस में 17 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो ऑर्गेनिकली रैंक किए हुए हैं. ये 68 एज भी ऑल्दो ऑब्वियसली दोनों की ऑलमोस्ट सेम ही है, 10 महीनों का फर्क है. वेरिएशंस 2 हैं, एक है. ये देखें, ये अब क्योंकि यहाँ तक तो मुझे एक आइडिया इतना अच्छा नहीं हो पा रहा था कि, क्योंकि ऑब्वियसली ऑल्दो प्राइस हमने इसका 6.9 कंसिडर किया, लेकिन यहाँ तक अभी मुझे हो रहा था कि चीजें डिफरेंस क्यों आ रहा है कि दोनों की एज भी सेम है, प्राइस भी 6.99 इसकी थी, इसकी 6.99 थी, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा क्यों बिक रहा है. तो एक मुझे चीज यहाँ से आइडेंटिफाई हो गई, अच्छा ये ईबीसी चला रहा था कि इसके पास ईबीसी एनहांस ब्रांड कंटेंट है. दैट माइट नॉट बी द ओनली फैक्टर contributing towards better performance for this particular seller, but from this data, because we want to have some sort of conclusion, we want to have some sort of evidence to justify the comparison between the sellers. अच्छा ईबीसी कंटेंट है तो हो सकता है कि इस वजह से इसकी ज्यादा कन्वर्जन्स हो रही हो, कि सेलर बायर इसके प्रोडक्ट लिस्टिंग में आते हैं और ईबीसी देखकर हो सकता है कि वो कन्वर्ट हो रहा हो. देयर आर लॉट ऑफ factors which we'll be discussing in listing and optimization schedules पे हम लोग देखेंगे what are the main factors which contribute towards higher conversion rate, but EBC is one of the most important factor as well and we cannot ignore that. So moving on, let's move on to other things. इसमें ये तो मैंने देख लिया कि this product is out of my league, I cannot select it as my main competitor, as well as this product because इसकी एज कम है. तो 2 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, मेरे पास पीछे 8 रह गए. अब उन 8 में आई ट्राई टू सी द वन विच हैज द ग्रेटेस्ट सेल्स टू वॉल्यूम रेशियो. इसकी अच्छी है 1.71, 0.90, 1.43. okay, it is good, I might like to see it as well, but I think मैंने देखा था इसकी 11.99 ही जा रही थी, प्राइस कंसिस्टेंट प्राइस जा रही थी. सो वी ट्राई टू टेक दोज, नॉट ऑल द टाइम्स, लेकिन जिसकी कम प्राइस ऑब्वियसली हो तो वी गिव अ मार्जिन टू दैट प्रोडक्ट कि कम प्राइस होने के बावजूद भी वो ऊपर बैठ के और उसकी सेल्स टू वॉल्यूम रेशियो या रेवेन्यू वॉल्यूम रेशियो बेहतर है. सो लेट्स मूव ऑन टू 1.28 वाले में देखते हैं, बट अगेन ये इसकी एज कम है. ओके, सो 1.98 आ गया. सो
इसको मैं देखना पसंद करूंगा कि 1.98 और अब 1 पॉइंट बाकी तो हम लोग देखें 0.26, 0.93, 0.69। ऑल्दो दीज आर गुड। बहुत रेयर ऐसे होता है कि क्योंकि ज्यादा हमारा हम होता है, हम पहले जो हमारे ज्यादा रिव्यूज होते हैं उनको रेड कर देते हैं और बाकी बहुत हमारे पास कम प्रोडक्ट्स रह जाते हैं जिसमें से हम लोगों ने डिसाइड करना होता है कि विच वन शुड बी आर मेन कंपेरेटर। लेकिन इसमें दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी केस, दिस इज यूनिक केस राइट नाउ जिसमें हमारे वो रिव्यूज भी कम है। अब मैं 1.98 देखना पसंद करूंगा और इसको मैं देखता हूँ कि एज इसकी चले 14 महीने की है, ये पुराना बैठा हुआ है। टॉप 10 पोजीशंस, ओके इट हैज गॉट 10, इसकी 17 है। 11 पे इसके हमने बात की थी पीपीसी की, जिनके स्पॉन्सर्ड रैंक 10 और लेस देन 10 है, और इसके 20 है। सो आई कैन सॉर्ट ऑफ जस्टिफाइड कि अच्छा थोड़े से ज्यादा कीवर्ड्स पे हो सकता है कि अच्छे कीवर्ड्स वो पीपीसी में ऑप्टिमाइज कर रहा हो या पीपीसी अच्छी चला रहा हो जिसकी वजह से उसकी रेवेन्यू या सेल्स उसकी बूस्ट हो रही हो। अगेन मूविंग ऑन, इसका थोड़ा सा बेटर है उससे, इसका रेवेन्यू और वॉल्यूम रेशियो इज आल्सो बेटर। कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम 41.83, 50.29। सो लुक कि कम कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कैप्चर करने के बावजूद भी ये इस नीश में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। कि 14 महीने से ज्यादा एज हो गई, अगर 6 से कम होती तो हो सकता है मैं कहता इसका हनीमून पीरियड चल रहा है, बट जो 14 महीने वाला सेलर होता है वो कंसिडरेट कि अच्छा थोड़ा सा मेच्योर हो गया, क्योंकि हमारा ये होता है फॉर लाइक वी गिव दिस टिप टू आवर क्लाइंट्स के आपका कोशिश होना चाहिए कि पहले साल जब आपका गुजर जाए तो सेकंड जो ईयर है आपका, तब आप एटलीस्ट आपकी अगर पहले साल एक प्रोडक्ट आपने लॉन्च किए तो तीसरे साल उसके प्रॉफिट से एटलीस्ट 2 मजीद प्रोडक्ट आप अपने स्टोर फ्रंट में ऐड करते हैं और 3 प्रोडक्ट्स आपकी होनी चाहिए। तो वी कैन अज्यूम, सेफली अज्यूम कि ओके दिस इज अ गुड सेलर एज वेल राइट नाउ। अच्छा, इसका एस्टिमेटेड मंथली रेवेन्यू 13,000 और उसका हमने देखा था 12,000। ओके दिस इज गुड। मंथली सेल्स इज आल्सो नॉट बेटर देन दिस, इट्स ऑल 16, बट ठीक है, ऑल बराबर है क्योंकि 7.99 इसकी एक डॉलर प्राइस ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका रेवेन्यू में इतना खास फर्क नहीं होगा। रेटिंग्स इज आल्सो गुड एंड रिव्यू इज आल्सो लेस। इसके तो मतलब अगर आप लोग जब सोच रहे होंगे तो मुझे मेरे लिए आसानी किस में होगी कि मैं 114 वाले को कंपीट करूं या चेस करूं या 632 वाले को, तो ऑब्वियसली 114 वाले को चेस करना मेरे लिए आसानी होगी। सो आई माइट नाउ बी इंक्लाइन टूवर्ड्स सेलर 7 के अच्छा दिस कैन बी सॉर्ट ऑफ आर कंपेरेटर के अगर मैं इसको लेके चलूं तो इसके अच्छा लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर भी बहुत अच्छा है, ईबीसी कंटेंट भी है इसका। लेकिन हमारी जो कोशिश होती है वो हमेशा यही नहीं होती कि सारे चीजें वो टिक मार्क कर रहा हो, बिकॉज वी ऑल्सो हैव टू फाइंड अपॉर्चुनिटी और स्पेस कि अगर इसका ईबीसी कंटेंट नो होता, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर सबसे वर्स्ट होता और ये स्टैट्स होते, तो मैं ज्यादा इंक्लाइंड होता इन ऑर्डर टू चूज इट एज अ कंपेरेटर कि मेरे जहन में आता कि अच्छा मैं ईबीसी इसका नहीं है मैं चला देता हूँ, इसका लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर वर्स्ट है, मैं अपनी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन इस लेवल की करूंगा कि आई कैन compete this very quickly. So we try to identify these things. These things should not be positive while we select our comparators. These should be sort of negative. पीपीसी अच्छा 20 पे चला रहा है और पीपीसी भी मैं नजर आ रहा है कि अच्छा अगर ये डाटा है तो पीपीसी भी है टॉप, इसके 20 ऐसे कीवर्ड्स हैं जो टॉप 10 में आ रहे हैं, तो आई कैन सेफली अज्यूम कि ये 50 कीवर्ड्स पे तो चला रहा होगा इस टाइम जिनका ऑर्गेनिक स्पॉन्सर्ड रैंक 10 से अबव होगा। मूविंग ऑन टू दिस, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभी तक मेरे जहन में ये आ रहा है कि ओके आई कैन सेफली assume that this can be my potential competitor, but I cannot take a decision right now. But let's say this can be our main competitor. ये हम लोग कीवर्ड डोमिनेंसी भी देखेंगे, 52% कीवर्ड डोमिनेंसी है, यानी कि अभी 48% अब स्पेस मौजूद है इस सेलर के लिए जो ये आइडेंटिफाई नहीं, इसने या की नहीं आइडेंटिफाई या इसने इस तरफ ध्यान नहीं दिया, या दिस इट्स क्वाइट पॉसिबल नॉट एवरी सेलर ऑन Amazon knows the advanced techniques, not every seller on Amazon knows how to rank their product well, not every seller on Amazon knows how to boost their sales and how to study the data. मतलब
करोड़ों प्रोडक्ट्स अमेजोन पर हैं, करोड़ों सेलर्स हैं, सब बैठ के ये मास्टर कीवर्ड फाइल तो स्टडी नहीं कर रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे, मतलब ये तो हम टॉप 10 की बात कर रहे हैं, फिर हम पहले पेज की अगर बात करें तो 48 प्रोडक्ट है, 48 प्रोडक्ट्स दूसरे पेज पर भी बैठे हुए हैं, तीसरे पेज पर भी हैं, 7वें पेज तक भी बैठे हुए हैं, एंड दे माइट नॉट अंडरस्टैंड इन देयर कंप्लीट लाइफ why are they on the 7th page or what is the benefit of coming onto the first page। उनका सीन में होगा, अच्छा हम Amazon पर बेच रहे हैं, हमें कोई 2-4 सेल्स रोजाना की आ रही है, ओके वी आर गुड टू गो, बट दे डू नॉट नो that if they come onto the first page, if they come onto the top 20 spots, if they come on to the top 15 spots, if they're coming onto the top 10 spots, this means that their sales might increase, their sales velocity might increase, they might earn good revenue। Okay, so now moving on, अभी तक मुझे ये लग रहा है कि अच्छा this might be a good competitor for me according to the criteria जो मैंने देखा है। नेक्स्ट पर आकर मैं ओके सो लेट्स इसको भी थोड़ा सा इसको इनकंसिस्टेंसी ऑफ प्राइस है 11.99 और इस 11.99 को हम लोग कंपेयर करके देख लेते हैं। अच्छा इसके 1550 रिव्यूज हैं, 439 है, मूविंग ऑन बीएसआर 23,000 का है, 18,000 का है, ओके 1215 की सेल्स हैं इसकी 823 की है, नॉट अ बिग डिफरेंस। तो ऑब्वियसली ये वाला 14,000 वाला ज्यादा कमा रहा है। कैप्चर सर्च वॉल्यूम 85,000 का, इसका 88,000 का है, ओके क्लोज कॉल 43%, 42%, 1.43, 0.93 सेल्स टू वॉल्यूम रेशियो का मसला आ जाता है। तो वील ऑब्वियसली प्रेफर दैट सेलर व्हिच हैज सेल्स वॉल्यूम रेशियो ग्रेटर देन दिस। 8 पे पीपीसी चला रहा है जिनका ऑर्गेनिक स्पॉट 10 से कम है, एज कम्पेयर टू दिस ये 20 पर चला रहा है। मतलब आई मीन 20 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनका स्पॉन्सर्ड रैंक इसका 10 और लेस देन 10 है। ओके सो दिस माइट बी एन आई ओपनिंग सिचुएशन फॉर मी कि 20 पर चलाने के बाद भी इससे पीछे है। टॉप 10 पोजीशंस 12 है, 13 है, मतलब तकरीबन ये 3-3.5 साल से बैठा हुआ है, और ये आपका 2 साल से बैठा हुआ है। सेम अराउंड वेरिएशन 4 हैं, वेरिएशन 1 है। ईबीसी कंटेंट इसका नहीं है, इसका बीबीसी कंटेंट नहीं है। सो दिस माइट बी like I would like to, if I'm analyzing the data, I would like to get deeper into this कि इनमें अब ऐसा चल क्या रहा है कि इस सेलर में और इस सेलर में कोई ना कोई मसला तो है कि ये पीपीसी भी ज्यादा पर चला रहा है और फिर भी उससे कम सेल्स है। ये इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये इतना इसको पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन का हो सकता है इतना आइडिया ना हो कि ये इररेलेवेंट कीवर्ड्स पर पीपीसी चला रहा हो, या ये हो सकता है कि इसकी लिस्टिंग इतनी अच्छी तरह ऑप्टिमाइज्ड ना हुई हो एज कंपेयर टू दिस, ऑल्दो बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एन ईबीसी, बट ईबीसी इज नॉट द ओनली फैक्टर। हो सकता है अच्छा इसके 4.4 रेटिंग है, this has got 4.6 rating, this has got 4.7 rating, not a bigger difference but although difference is there। secondly हम लोग देखते हैं कि इस नीश में अगर आप एज अ बायर सोचें, आप जब इस नीश में एक प्रोडक्ट को आप सर्च कर रहे हैं तो ऑल्दो आप थोड़े हेजिटेंट होंगे इन ऑर्डर टू गो विद विद अ प्रोडक्ट जिसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो। ये हमने इसे डिस्कस किया था, ये 24 में बेच रहा है और ये पैक ऑफ 3 में बेच रहा है। इट्स क्वाइट पॉसिबल दैट दिस माइट नॉट बी रेलिवेंट प्रोडक्ट जब जो सर्च कर रहा हो उसको। there can be a lot of reasons we have to justify this, we have to get into deeper into this to see what exactly is happening। हो सकता है कि बीच में इसकी सोशल इस वाले की हो सकता है एक्सटर्नल ट्रैफिक ये लेकर आ रहा हो, पीपीसी कम चला रहा है पर एक्सटर्नल ट्रैफिक लेकर आ रहा है, और एक्सटर्नल ट्रैफिक की वजह से ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन, मतलब ये तो काफ़ी देख लेंगे, प्राइस की प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है इसका, not a good situation, not a good health for this particular product। काफी ज्यादा इसके मसले मुझे यही नजर आ रहे हैं। सो फॉर दिस पर्टिकुलर टाइम कि एक एक ये जो चीजें हैं हमारी, इसको स्टडी करने के बाद हम वी कैन सेफली एज्यूम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि ओके वी कैन टेक दिस एज आवर मेन कंपेरेटर राइट नाउ। सो नाउ मूविंग ऑन,
हमने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ये हमारे सेल्स सेग्रीगेशन, और वी कैन से add one for revenue segregation. अब हमने लाइक वी हैव टू सी कि ये जो हमारा एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, एज आई मेंशन्ड इन अर्लियर सेशंस, अब हमें एक एक कीवर्ड की डेप्थ में, एक एक कीवर्ड की गहराई में जाएंगे कि ये कीवर्ड हमारे लिए क्या रैंकिंग जूस लेकर आ सकता है, क्या फायदा हमारे लिए कर सकता है. So what we can do is, okay, up we can safely assume, because we have taken this as our main comparator, we have selected it as our comparator. So we can say, okay, if we want to, if you're competing it, so let's say we might also get an estimated monthly sales of 1667. So I'll multiply this with the individual contribution, or I'm sorry, the search volume. I think net it's I'm facing sort of issue with my internet. Just give me a second. Let me fix it. Okay, so we were discussing कि हमने सेल्स ये अज्यूम की है कि हमारी भी इतनी आ सकती है. तो द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर कीवर्ड वाज 23%. और वो हमने पहले डिस्कस किया था कैसे निकाला था, द वॉल्यूम ऑफ दिस ओवर द टोटल सर्च वॉल्यूम ऑफ द पोटेंशियल कीवर्ड्स. नाउ मूविंग ऑन, वी व्हाट वी कैन सी राइट नाउ, इसको मैं ये पॉइंट फॉर्म थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट नंबर 391. इसका मतलब ये है कि दिस कीवर्ड हैज द पोटेंशियल टू ब्रिंग 391 मंथली सेल्स. यानी इस कीवर्ड में इतनी पोटेंशियल है कि ये हर महीने अराउंड 400 की सेल्स मुझे अकेला ला के दे सकता है. ये वाला जो कीवर्ड है रेड शेफ हैट, वी नॉट गेटिंग इनटू दिस, वी नॉट getting हमारे प्रोडक्ट की अभी डिजाइन किया, बिकॉज लेटर ऑन वील बी डिस्कसिंग डिजाइन सिलेक्शन एंड देन वील कम बैक टू द मास्टर कीवर्ड फाइल टू फिल्टर आउट अगेन दोज कीवर्ड्स दैट आर नॉट रेलेवेंट टू आवर डिजाइन. या फिर हो सकते हैं हम व्हाइट में बेच रहे हो, रेड में ना बेच रहे हो. But let's assume okay, all these keywords, because this is a white chef hat, this is red chef hat, it's quite possible that you might be launching two variations of the product at the same time, but let's also assume that you might also be launching only one variation, a white key variation launch kar rahe. Let's not get into this right now, we'll be discussing this in detail when we'll be performing niche analysis in order to select a design. और फिर हम लोग वापस इस मास्टर कीवर्ड पर आके मजीद फिल्ट्रेशन कर सकते हैं. And अभी we can see these particular keywords can bring around these much sales. रेवेन्यू का भी चले हम लोग देख लेते हैं. This is the estimated monthly revenue और individual contribution 23%, which means कि ये हमारा हर प्रोडक्ट, हर कीवर्ड की रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आ गई है कि कौन सा कीवर्ड में कितनी पोटेंशियल है कि वो कितना रेवेन्यू हमें हर महीने आके लाके दे सकता है. ये जो भी इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आपको जीरो की नजर आ रही है, व्हाट आई विल डू इज इसको मैं थोड़ा सा पॉइंट्स इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको नजर आ जाए कि अच्छा बिल्कुल जीरो नहीं है. कि देखें जिसकी 0.5 पे है ये भी अराउंड इतनी आपको 67, 73, 78, $100 भी लाके 1% से कम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन है, बट स्टिल इट्स ब्रिंगिंग यू सेल्स. सो यू गाइस, नाउ यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई earlier in earlier sessions I mentioned के gap keywords क्या होते हैं. Gap keywords, so these are basically the gap keywords, the mid tail keywords, long tail keywords as I discussed here. ये लॉन्ग टेल 20% कीवर्ड्स हैं, 21 कीवर्ड्स हैं जिनका कंबाइंड सर्च वॉल्यूम 63,000 का है. अगर मैं इंडिविजुअली देखूं आखिरी 21 कीवर्ड्स को, हो सकता है मैं इनको ना उठाऊं कि अच्छा सर्च वॉल्यूम कम है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी इनकी सबकी बहुत कम आ रही है, तो हो सकता है माइट इग्नोर दें. लेकिन जब मैं इनको कलेक्टिवली देखता हूँ, कलेक्टिवली देखने के बाद मुझे अंदाजा होता है कि नहीं, जब मैं कलेक्टिवली इनके साथ
करूंगा, खेलूंगा, तो मेरे पास वॉल्यूम भी ज्यादा है और इन सब की जो इंडिविजुअल रेवेन्यू सेग्रीगेशन है कंबाइंड वो भी ज्यादा है। अब आप लोग यहाँ से भी इसका अंदाजा लगा दीजिए कि चले 23 कीवर्ड्स, टॉप 50% सर्च वॉल्यूम था उनका। ये चलिए, दिस इज ऑल्सो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन। कभी कभी ऐसा होता है कि टॉप जो 3 के कीवर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टॉप 3 के कीवर्ड्स होते हैं, वो टॉप 50% सर्च वॉल्यूम लेकर जा रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये 47,000 है, यहाँ 50,000, यहाँ 40,000 या 35,000, और दैट कैन मेक अराउंड 50% ऑफ द मेन सर्च वॉल्यूम ऑफ द पोटेंशियल कीवर्ड्स। उसमें हम लोग तब ये डिसाइड करते हैं, मतलब ये मैंने खुद से थोड़ा डाटा टेम्पर किया इन ऑर्डर टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, कि हम फाउंडेशन की बात करते हैं कि 3 कीवर्ड्स पे अगर हम लोग रैंक कर जाए, या एज कम्पेयर टू इट हम 12 पे 21 पे रैंक करें, तो फायदा हमारे लिए कहाँ होगा। फॉर एग्जाम्पल आप घर बना रहे हैं अपना, आपने 3 पिलर्स पर अपनी घर की बुनियाद रखी है, और एक तरफ आपने 12 पिलर्स पे या 21 पिलर्स पर घर की बुनियाद रखी है। तो थोड़ा सा जब हिलेगा घर, जलजिले की सिचुएशन में, प्राइस वॉर की सिचुएशन में, आउट ऑफ स्टॉक जाने की सिचुएशन में, Q4 की सिचुएशन में, क्रिसमस या कोई और इवेंट की सिचुएशन में, जब थोड़ा सा आपकी नीश हिलेगी, लोग प्राइस कम करेंगे, कोई प्राइस ज्यादा कर रहा है, कोई पीपीसी चला रहा है, तो किस सिचुएशन में ज्यादा चांसेस हैं कि आप लोग सरवाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे। तो यही सिचुएशन है कि जितने ज्यादा पिलर्स होंगे, जितनी आपकी मजबूत फाउंडेशन होगी, उतने ज्यादा चांसेस हैं आपके बचने के, सस्टेन करने के, टिक के रहने के इस नीश में। So again, this is the main concept of 50% search volume mid tail। क्योंकि mid tail पे हम लोग जाते हैं, these are basically ये जो हमारे mid tail और long tail है, मैक्सिमम sellers इग्नोर कर देते हैं कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स चले यहाँ भी अगर 23 आ रहे हैं, तो वो पहले 23 देखेंगे, अच्छा 23-20 तक जाएंगे, यार ये बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, सर्च वॉल्यूम इनका बहुत अच्छा है। लेकिन जो मिड टेल कीवर्ड्स हैं, they usually ignore it, they do not want to get into it, they do not trust these keywords। But for me, after experimentation, I can say this without doubt that these are the potential keywords which you guys should use while listing and optimization, while running PPC, because in keywords की PPC bid भी कम होती है, इन पे बहुत strong competition होता है, strong competition होने की वजह से PPC bid is higher, and if PPC bid is higher तो obviously आपके लिए मसले वाली बात हो सकती है। so monthly रेवेन्यू हमने लास्ट टाइम छोड़ा था, सो ये हमारा मंथली रेवेन्यू हो जाएगा, बिकॉज हम कंपेरेटर का इस टाइम टारगेट मंथली सेल्स ले रहे हैं, एंड दिस कैन बी 166। सो इस पे तो बेसिकली अभी भी वी कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल इनटू हाउ टू एनालाइज द सिचुएशंस, हाउ टू जस्टिफाई द डेटा, हाउ टू रीड द डेटा। सो दैट्स बेसिकली मोस्ट important thing which we can do right now। let's give you guys a tip, कि आपको टिप देता हूँ in order to acquire the client here। It's not part of this module, but let's just try to give you a more important tip as well for client acquisition। Let's assume आप client के लिए प्रोडक्ट हंट कर रहे थे, आपने मास्टर कीवर्ड फाइल बना ली है। मास्टर कीवर्ड फाइल बनाने के बाद किसी XYZ वजह की बुनियाद पर आप लेट्स से इस प्रोडक्ट पर नहीं जा रहे, लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को एक अच्छा खासा स्टडी कर ली है, तो क्या अब आप करेंगे, अच्छा वापस किसी और प्रोडक्ट पे चले जाएंगे, शुरू से काम स्टार्ट करेंगे, या यू शुड यूज इट एज अ अपॉर्चुनिटी। मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, आई वुड रिकमेंड यू गाइस नॉट राइट नाउ, फॉर दोज पीपल हु विल बी लुकिंग इनटू दिस रिकॉर्डिंग, हु आर एट बेसिक लेवल राइट नाउ, हु are just at the product validation stage and who like have to cover the whole module। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको अभी इस नीश के बारे में और स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पता चल चुका है। सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू आइडेंटिफाई दोज कंपेरेटर्स या दोज प्रोडक्ट्स हु आर परफॉर्मिंग पुअरली इन दिस नीश, जो फॉर एग्जांपल ये बहुत पुअरली परफॉर्म कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ देम आर पुअरली परफॉर्मिंग। रीच आउट टू देम, कोल्ड ईमेल देम, कोल्ड कॉल देम, रीच देम। अब ये मैं आपको अभी नहीं बता सकता, या मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये हम क्लाइंट एक्विजिशन के मॉड्यूल में बहुत डिटेल में कवर अप करेंगे कि हमने क्लाइंट्स को कोल्ड कॉल कैसे करनी होती है, कोल्ड ईमेल कैसे करनी होती है। बट ये गॉट एन अपॉर्चुनिटी राइट नाउ, आपको पता चल गया है कि कौन सा सेलर बुरा परफॉर्म कर रहा है,
और अगर if a seller is performing poorly on Amazon, so that means there is an opportunity for you as a virtual assistant, or there is an opportunity for you if you're operating as an agency to reach out to that client, to tell the client all the things or all the bad things which that client is doing right now, and how what strategies are you coming with, उसको आप strategies बताएं, उसको आप लोग बताएं क्या क्या मसला मसाइल है, आप बताएं कि बाकी competitors top 10 में क्या कर रहे हैं वो बताएं, और you tell him that how can you improve the sales for that particular competitor. ये भी देख के जब आप डीपली एनालाइज आपने इतनी कर लिया कि कौन सा competitor सोशल मीडिया कैंपेन्स चला रहा है, कौन सी एक्सटर्नल ट्रैफिक ला रहा है, तो यू कैन जस्ट क्विकली टॉक टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट ऑन स्टैट्स ऑन एविडेंस बेसिस कि मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग एफर्ट कर रहे हैं और इस प्रोडक्ट में अगर नहीं भी जा रहे, प्रोडक्ट किसी ना किसी वजह से अभी हो सकता है कि आगे जाके जब हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हो, जब हम लोग डिजाइन सिलेक्शन कर रहे हो, सोर्सिंग कर रहे हो, पीपीसी पर हम लोग आए, तो हो सकता है कि बेशुमार situations ऐसी आए where we have to drop this product. So I recommend my students to keep one thing in their mind, that just be prepared to drop the product at any stage, whether you have put in the effort for around 2 months, 3 months, 5 months, जितनी भी आपने effort put की है, उस प्रोडक्ट को लॉन्च होने से पहले, प्राइस सोर्सिंग करने से पहले या सोर्सिंग करने के दौरान भी आप रेडी रहें, बी मेंटली प्रिपेयर्ड, हैव योर बैकअप. इसमें मैंने आपको इतना ये बता दिया है कि जस्ट रीच आउट, यू कैन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू गाइस, बट यू कैन रीच आउट टू दीज potential clients. These can be your clients. You can tell them, you can talk them. They might be surprised, they might be happy, they might, वो आप उनको ही शुक्र है कि मैंने स्पेसिफिकली आप ही काम किया कि I was going into this. You can just draft a cold email कि I was going through this category and I came across this your product, and I came across the other products as well, and I deeply analyzed this product or this niche, and I came across that there are a lot of mistakes which you are making, and uh, if you correct these mistakes, you might get into top one or top two or top three, if even if you're in top 8, 9, or 10. So these are all the things which you can do. So now moving on. So these are basically called mirror sheets जो मैंने आपसे बात की थी. अब इनका हमने क्या करना है? So I mentioned earlier as well कि अच्छा organic जब हमने ready कर ली है, तो what now I have to do is, because this master keyword sheet is ready now, I'll copy this whole sheet and I'll paste it here. इसी तरह मैं इसको यहाँ भी पेस्ट कर दूंगा. I'll keep on doing this for all the 10 comparators. These are basically called mirror sheets. कि हम लोगों ने एक एक प्रोडक्ट की जब बिल्कुल गहराई में जाना होता है, भी जैसे भी मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग फॉर एग्जांपल सेलर वन को जब इतना डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, हम लोग करना क्या चाह रहे थे. And trust me, guys, when you will be showing this stats, these data to your client, that client will be surprised, of course. उसको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये इतना डेटा इससे निकाल कहाँ से लिया है. कि आप क्लाइंट के साथ जब बात कर रहे हैं, आपने प्रोडक्ट हंट की, आपने प्रोडक्ट वैलिडेट किस तरह की है, किस किस बेसिस पे आप प्रोडक्ट को लेके गए हैं. अगर हो सकता है कि इतने ज्यादा रिव्यूज ज्यादा होते, हमारी रेवेन्यू वॉल्यूम रेशियो खराब होती, कैप्चर सर्च वॉल्यूम हमारा बड़ा खराब होता, तो हम इस प्रोडक्ट में जाते ही ना. आप एक बात कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कितने कीवर्ड्स, पोटेंशियल कीवर्ड्स निकले हैं, और हर कीवर्ड कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी सेल्स बूस्ट करने में. This can be a turning point for your client. This can be an eye opener for your client. You might be able to gain trust of your client. वो बताओ कि अच्छा ये मेरे से बात वैसे नहीं कर रहा, ये सारी स्टैट्स पर मेरे से बात कर रहा है. Just give me a second. I'm trying to complete this last mirror sheet. So I'll share with you guys the sheet as well.
कि मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, सो यू गाइस कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ इट, और आप इसको बहुत डीपली एनालाइज करें, इसको स्टडी करें, इसको फिर जब बनाएं तो आपके लिए आसानी आपके लिए पैदा हो जाए. And this might take you around 2 to 3 hours to complete this master keyword file. So I recommend you guys, if the viability analysis goes well, then I would recommend you guys to build master keyword file in order to select your main comparator. अब इसमें हम लोगों ने करना क्या है, because these are mirror sheets for each and every comparator, we'll go ahead. यहाँ मैं filter लगा दूंगा. Filter I can top number filters less than or equal to 10. इसी तरह I'll repeat this process for all these sellers here. Again, मैं एक चीज खुद इंडिविजुअली एक फिल्टर आपके सामने इसलिए लगा रहा हूँ, so you guys can understand what's going on. You guys should not be stuck while building this master keyword file. और ये हम 10 का इसलिए लगा रहे हैं because we are taking an assumption कि the revenue might come to like it's coming to a पहली 10 पोजीशंस में आ रहा है या पहली 20 में आ रहा है, वो आपके डिपेंड करता है प्रोडक्ट में. हम अपनी कोशिश करते हैं जितना क्राइटेरिया हम टाइट करें उतना हमारे लिए बेहतर होगा. इसमें while I am doing this I can also tell you guys कि ये आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं रेवेन्यू को कि आप टॉप 20 टॉप 15 का रेवेन्यू या टॉप 30 का रेवेन्यू एनालाइज करें और देखें रेवेन्यू ड्रॉप कहाँ हो रहा है. कि फॉर एग्जांपल पहले 15 10 15 का 10 का जो रेवेन्यू है, 12 का रेवेन्यू है, 15 का रेवेन्यू है, वो आपका 15,000 का आ रहा है, 15,000 8 15,000 10,000 16,000 की रेंज में, 20,000 की रेंज में. और अचानक जब आप 13वें या 14वें स्पॉट पर आए हैं तो वो एकदम 2,000 3,000 पर गिर गया है. सो दैट मीन्स के बायर वहां तक परचेजिंग नहीं कर रहे, वहां तक खरीद नहीं रहे. बट वी कैन सेफली अज्यूम कि नहीं, काफी हद तक हम लोग अगर टॉप 15 पर भी आ जाए, बिकॉज Amazon मार्केट एक्सपैंड कर रही है, लॉट ऑफ सेलर्स आर कमिंग, बायर्स हैव बायर इंटेंट भी हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि बायर का बिहेवियर क्या होता है, व्हाट्स द कंज्यूमर बिहेवियर, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच बायर हैज इन हिज और हर माइंड व्हाइल making the decision either to purchase this product or not to purchase this product. इसलिए लगा रहा हूँ because we'll be studying the mirror sheet for our comparator as well. और जो हम बात कर रहे थे नंबर 1 सेलर जिसकी जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं बाकी सेलर्स को, वो एक्चुअली में थोड़ा सा मजीद और डिटेल में हम लोग इसकी जाते हैं. So we are left with only 2. So this is the last one. ताकि हम मेन पर्पस ये होता है कि हम जो कीवर्ड्स हैं फॉर ईच सेलर उनको बहुत डिटेल में आकर स्टडी करें कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं. ये तो हमने बात कर ली थी कि इतने कीवर्ड्स पे वो रैंक है, इतने कीवर्ड्स पर वो रैंक नहीं है. कि मैंने चले अभी 10 कर दिए, मैं 20 भी कर सकता था, मैं 25 भी कर सकता था, 30 भी कर सकता था, बट अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. अच्छा, सो दिस इज द मिरर शीट फॉर आवर फर्स्ट कंपेरेटर. कि हम लोग देख रहे थे कि टॉप 10 पोजीशंस में यहाँ पे हमने स्टडी किया था 31 कीवर्ड्स हैं. तो ये 31 कीवर्ड्स आ रहे हैं. अब हम देखते हैं
मतलब हम देख सकते हैं कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको ये जिन पर रैंक है या जिन पर ये यूज कर रहे हैं, जिन पर इनका इसका ऑर्गेनिक रैंक <10 है। अब सारे वही कीवर्ड्स हैं जो 47,000, 13,000, 9,000, और ये भी हम देख रहे हैं कि मेजोरिटी में टॉप 10 तो छोड़े, इसका 1 2 1 2 3 4 <5 पे ये इसका ऑर्गेनिक स्पॉट्स पर मौजूद है अगेंस्ट दिस कीवर्ड। सो दिस इज अगेन जस्टिफाइंग ओके। सो बिकॉज के ऑलमोस्ट हर पोटेंशियल कीवर्ड पर इसका ऑर्गेनिक रैंक हाईएस्ट है, सो दिस मीन्स बाय हाईएस्ट आई मीन कि लोअर है 1 2 3 4 5। सो बाय दिस वी कैन assume कि अच्छा दिस मीन्स के दिस इज नाउ जस्टिफाइड, हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वो कीवर्ड्स हैं जिन पर ये ऑर्गेनिकली रैंक है, जिसकी वजह से हो सकता है कि दीज आर पोटेंशियल कीवर्ड्स, हाई वॉल्यूम कीवर्ड्स। देखें इसने लोअर टेल भी पकड़े हुए जिनका 900 का वॉल्यूम है, 931, 700 का वॉल्यूम है, इन पर भी आकर फोर्थ स्पॉट पर, थर्ड स्पॉट पर आकर बैठा हुआ है। किसने कीवर्ड्स का चंक को टारगेट किया, कीवर्ड्स को ये इग्नोर नहीं कर रहा। बिकॉज अगेन मैं ये बात बहुत दफा रिपीट कर चुका हूँ, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड बेसिकली या सर्च टर्म बेसिकली हमारे प्रोडक्ट तक पहुंचने के लिए एक दरवाजा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक अगर लेट्स से आसान लफ्जों में पहले भी मैंने एग्जाम्पल दे चुका हूँ कि एक अगर घर है आपका, उस घर का बाहर एक दरवाजा है, तो इसका मतलब है कि एक रास्ते के थ्रू आप उस घर के अंदर दाखिल हो सकते हैं। अब लेट्स अज्यूम कि एक दरवाजा नहीं है, इस घर के 3 दरवाजे हैं, तो एट द सेम टाइम 3 डिफरेंट दरवाजों से, 3 डिफरेंट पैसेजेस से आप लोग, डिफरेंट लोग घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। अब मैं कहता हूँ कि अगर उस घर के 50 दरवाजे हैं तो सेम टाइम पे 50 लोग एंटर हो सकते हैं। इसी तरह वी कैन सी कि अगर एक कीवर्ड है तो उसके 15 या 20 आप कह लीजिए कि कीवर्ड्स हैं, तो दिस मीन्स दैट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम like 15 there's like 15 different ways to get to that product as compared to कि अगर कोई किसी के 100 पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं, 500 पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं, 150 पोटेंशियल कीवर्ड्स हैं, हाई सर्च वॉल्यूम है, रिलेवेंसी उनकी 3 एंड ग्रेटर देन 3 है। तो दिस मीन्स कि 150 डिफरेंट तरीकों से बायर आपकी प्रोडक्ट तक पहुंच सकता है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं कि हमने कौन सा कंपेरेटर सिलेक्ट किया था। So that was seller 7। जो हमने कंपेरेटर 7 सिलेक्ट कर लिया, तो हम देखते हैं कि टॉप 10 पोजीशंस में तो ये कम कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है। सो व्हाट वी कैन डू इज, अगर हम इसको compete करना है तो हम लोगों ने अपने कीवर्ड्स की पूल को इंक्रीज करना होगा इन ऑर्डर टू compete इट। वी हैव टू गेट इनटू दिस पोजीशन की। ये तो देख लें, सिर्फ 10 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका ऑर्गेनिक स्पॉट 10 से कम है, 10 और <10, सिर्फ 10 कीवर्ड्स हैं। मुझे या हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू टारगेट मोर कीवर्ड्स, वी हैव टू आइडेंटिफाई मोर पोटेंशियल कीवर्ड्स टू क्विकली चेज दिस। कि हमें इसको फौरन चेज करना है, कि फौरन हम इसको 114 इससे रिव्यूज है, हम पहले 3 महीने में, पहले 2 महीने में 114 तो क्रॉस करके इसकी पोजीशन तो हम लोग ले लें और इसका तो हम लोग आकर इस पोजीशन में आकर बैठ जाए। So this was basically वो तो हम जितनी we can discuss it the whole day, we can analyze it deeper down, but now I expect you guys that when you listen to this recording, I want you guys to get deeper down into this। थोड़ा देख करें, कुछ identify करें, कुछ ऐसी चीज है which you feel that this should also be included in its analysis। But right now there are a lot of things, which I have deliberately missed, which I want you guys to identify, which other metrics should we involve in order to analyze this niche, these top 10 sellers in more details. So yes, this was a quite big session today, but the main purpose of this, in the first part of this session, we discussed how to build a master keyword file from scratch, and in the second part, we discussed how to analyze it and how to select our main comparator after analyzing this niche। इसमें अगर ये हमें नीश कोई थोड़ी सी खराब मिलती कि हमें यहाँ, तो लाइक वी आर आइडेंटिफाइंग द अपॉर्चुनिटीज, वी आर वैलिडेटिंग द प्रोडक्ट। कीवर्ड डोमिनेंसी हम लोग वायबिलिटी एनालिसिस में भी देख रहे थे, व्हेन वी हैड chosen
कंपेरेटर्स अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू, हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एसेंस हमने सिलेक्ट किए थे। इसमें तब भी हमने वाइबिलिटी एनालिसिस करके कीवर्ड डोमिनेंसी चेक की थी। इधर हम लोगों ने जब टॉप 10 सेलर्स लिए हैं, यहाँ हमने कीवर्ड एनालिसिस सॉरी वाइबिलिटी एनालिसिस की और कीवर्ड डोमिनेंसी फिर चेक की। हम बार बार देख रहे हैं कोई ऐसा पॉइंट हमें नजर आ जाए। बिकॉज अगर कोई प्रोडक्ट आपको लग रहा है कि इट्स गुड टू गो और बहुत ही आपको क्लियर नजर आ रहा है, बहुत रेयर होता है ऐसा कि आपको यहाँ, मैं आपको इससे पहले मेंशन किया, रिव्यूज की भरमार होती है, आपकी लिस्टिंग कभी कभार मेजोरिटी नए बैठे होते हैं, FPM होते हैं, कैप्चर सर्च वॉल्यूम बड़ा खराब होता है, सेल्स और वॉल्यूम रेशो हम लेस देन 1 ही सारा आ रहा होता है, और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही क्लोज कंपटीशन आ जाता है कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं किसके साथ जाऊं किसके साथ ना जाऊं। कभी कभार ऐसा होता है कि सारे ही बड़ा खराब काम खराब होते हैं और आपसे कंपेरेटर सिलेक्ट नहीं किया जाता। So these are all the metrics which I want you guys to understand, to execute, to implement, and then select our main comparator. You guys might be thinking at this point of time that what is, हमने comparator select तो कर लिया, but what is the importance of selecting our main comparator? Obviously, I'll let you guys know in future when we'll be conducting niche analysis, when we'll be conducting profitability analysis, because इसको अब हम लोग थ्रू आउट फॉलो करेंगे इस कंपेरेटर को, और हम लोग इसको बड़ा कीनली एनालाइज करेंगे कि ये क्या स्ट्रैटेजीज अपना रहा था, और फिर हम लोग जब प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस में इसकी FPA फीस, रेफरल फीस भी हम लोग फिर इसकी ही फॉलो करेंगे। So yes, it was all from my side. So we'll be having a short session soon, जिसमें I'll be taking a question of your guys. So if you guys don't understand this session, just go through it once, twice, thrice. पहले आप पहला पार्ट, पहला हाफ देखिए, बनाना सीखिए। बनाने के बाद आप लोग इस पार्ट पर आइए और देखिए कि how do you guys have to analyze it. So yes, guys, it's all from my side. I hope you guys understood this session on master keyword file. And yes, hope to see you guys soon. Take care, Allah Hafiz.